Preparation is not a mechanical process. Preparation एक process है. It is about mindset and real strategy. All the people who got success in life, and this is true for almost everybody, and I've seen people, when somebody, an IAS officer, a big businessman, future, कोई अच्छा नया कर रहे हैं, कोई नया entrepreneur है, when you see their journey, they are different. And they are different because they do things differently. They are more aligned to their goals and target. And the best part of that comes through self introspection. आज की जो era में है, हम लोग बहुत सारे noises we are living in. The noise in terms of social media, every pop-up, every notification is a disruption. Every phone call is a disruption. Every message is a disruption. And we are flooded with that. हम on an average 3 to 400 micro decisions लेते हैं. Micro decisions like मोबाइल उठाना, मोबाइल रखना. डू यू फेस अ प्रॉब्लम जहां पर आप चीजें भूल जाते हो, आप कीज भूल जाते हो, अपने नोटबुक्स भूल जाते हो, एंड यू फॉरगेट, यू ट्राई टू रिकॉल बिकॉज यू आर टेकिंग अ माइक्रो डिसीजन, यू आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट. एंड व्हेन दिस हैपेंस, it will impact your energy. You have limited energy, you have limited time. Reduce your decision making. अपने decision making को कम करिए. Take lesser decisions. Declutter your preparation, and that will start through self introspection. All UPSC aspirant आपको self introspect करना होगा कि चीजें हैं कहां. Preparation एक secondary है, उसका पहले का process. Introspect. Do you really want to be in the service? Or you're doing just because your parents want you to do, or because आपने जिद किया कि एग्जाम देना है? Are you able to avoid all the negative energies around you? Because it is not about studies, it is about courses, material, it is about who you are as an individual and the goals you have in your mind. But are you really aligned to that? और alignment तब होगा जब आप, when you come with the approach of very positive energy, very strong mindset, a strong belief system, and able to overcome every little hurdle. When you are demotivated, जब stress होते हैं तो आपका response क्या होता है, stimuli क्या होता है? Normally it should be action. It should be analysis and action. But are you doing that action? Most of you do not do. Now, for the people who are targeting UPSC examination, ask yourself where you stand. Introspect. आपकी preparation का level क्या है? Subject wise approach, topic wise approach. And when you do that, you understand how many tests you have given. But उससे पहले कि आपके sources ready हैं, आपके revision ready हैं. And don't try to complete the syllabus कि बस 2 महीने में syllabus पहले cover कर लेते हैं, फिर test देंगे. नहीं. It has to go concurrently. The syllabus might get over in first week of April also. It does not matter much. But whatever I've done so far, I have to be thorough in that. तो आपकी preparation में मान लीजिए भी 3 subject हुए हैं, 3 subjects have been done. Revise them and attempt mocks. Ask yourself how many mocks you've given. For example, at Edge, we have students and ये लोग सारे बच्चे जो हैं, मैं उनको push करता हूँ test देने के लिए. We have inner circle sessions every Wednesday. They come, we discuss. But जो लोग sincerely कर रहे हैं, उनको outcome दिखेगा. And I'm telling you, you listen mark my words, if you listen to the approach we decide, we help you, you will clear the prelims. On 24th May, शाम को 7 बजे आप calm होगे, composed होगे, and you'll be free from all the tensions because you are reaching a score of 100. Believe yourself, you are winner. अगर आप winner की तरह believe करोगे तभी you'll be winning. Otherwise, you would not do. Just think, affirm that I'm going to be a topper. I'm going to clear this exam. And when you do that, things will happen. आपके स्कोर्स क्या हैं, CSAT, GS में, व्हाट इज स्टॉपिंग फ्रॉम यू टू क्रॉसिंग 100? ये सारे सवाल का जवाब हमें चाहिए अगले फ्यूचर कुछ महीनों में. नाउ स्कोर्स कम विद नॉलेज, एप्लीकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एंड ऑफ कोर्स योर कॉन्फिडेंस. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू नो हाउ थिंग्स हैपन, कम विद अस, अलाइन विद अस, सी द डिफरेंस, एंड आई एम श्योरिंग यू, बिकॉज मेरा पर्सनल हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में एज के या फिर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम जुड़े हुए हैं, सबका प्रीलिम निकले. एंड फॉर दैट वी विल do whatever it takes, and it is not a rocket science. हर साल बच्चे निकालते हैं, and I'm telling you, just follow the process, outcome will come. Declutter preparation, reach out to us every Wednesday. inner circle session में आइए, mentorship session में आइए. Be very open, focus on effort. Don't worry about the test scores because worry will pull you down. That negative energy से दूर रखिए. Declutter preparation. डोंट स्पीक टू मच पीपल. एनीबडी जो आपको क्वेश्चन करता है, जज करता है, उससे दूर भागिए. सोशल मीडिया का रोल कम करिए, जरूरी है. इंक्रीज योर सिग्नल नॉइज कम करिए. आउटकम इज गोइंग टू हैपन, बट इट विल टेक टाइम, एंड वी स्टिल हैव टाइम, मोर देन 5 months. डू कनेक्ट विद अस. गॉड ब्लेस यू. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, and make sure you are there in the journey. God bless you. Take care. Bye.